Studios. I am Pranjal Sharma. Joining me is Railway Minister Mr. Suresh Prabhu, who has just completed quite a fascinating presentation of a lot of new initiatives for the railways. Joining me in this discussion on the impact of this on the common man as well as the industry are Mr. Chandrajit Banerjee, Director General at Confederation of Indian Industry, and Rajiv Lal, Executive Chairman of IDFC. Suresh ji, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ. ये लगभग पहली बार ऐसा हुआ है कि रेलवे बजट में नई गाड़ियों का ऐलान नहीं हुआ और आपने पैसेंजर की जो फेयर हैं वो भी नहीं बढ़ाए. तो इस निर्णय को लेते हुए आपके मन में क्या था? तो एक तो किसी भी चीज़ को देखने के पहले उसका कॉन्टेक्स्ट देखने की ज़रूरत है. एक तो फेयर हाइक करने का कारण क्या है कि आपको रेवेन्यू बढ़ाने हैं. तो हमारे टाइम ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो पहले ही 9 साल में सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग रेशियो है, क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर पे भी काफ़ी ध्यान दिया, फ्यूल कॉस्ट को कम करने की कोशिश की, रैशनलाइजेशन एक्सपेंसेस किया, फ्रेट को ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने की कोशिश की. तो इसके लिए मुझे लगता है इसका एक ये देखना चाहिए. दूसरी बात, हमारी नई ट्रेंड्स, ये नई ट्रेंड तो छोड़नी चाहिए. इसके ऊपर मैंने भी पार्लियामेंट में कहा कि हम छोड़ेंगे, लेकिन ये बजट सेशन में कभी ना कभी उसका ऐलान करेंगे. One of the problem has been that in the last few years people have been announcing lot of projects. About 600 projects have been announced in the last 30 years. Only 50% have completed. Was this the biggest challenge you faced when you took charge as the railway minister? No, absolutely. You know, this is something which we must put an end to it, because when we announce something, the announcement does not amount to completion of a project. You know, I wish as we say that I wish the wishes were horses. I think, you know, we cannot afford to do this anymore, even though we have horsepower and not horses anymore. But what is important is, how can we sustain railway system like this when we are not bothered about railway's ability to generate revenue? And if railway doesn't have revenue, which I was mentioning in my speech, then we are into a vicious cycle. No revenue, no investment, no quality of service goes down, people's ability to pay goes down, and then we stuck. So why not we create a new, regenerate railways by converting into a virtuous cycle of creating revenues, putting back into the system, helping the customers to pay. And in fact, this time we are focused on customers a lot. In fact, I must have devoted 20-25% of my speech to the customers, because I am sure if they realize that they are getting something, they will be also coming forward to tell me that that is what they would like to do. So in fact, the railway fare hike in the context of declining diesel prices should be also viewed properly, because, you know, diesel prices are declining, and if you keep now putting more money, and in fact there is we have put so many things in place. We have put a regulatory system in place which will then make sure that to understand that where the money is going, what should be the costing. So that regulatory mechanism will take care of some of these things that includes cross subsidization. But I am sure you cannot change. Rome is not built in a day. We cannot bring about change which is at a magnitude. Number two, what more important is that if you do it at a wrong time, when the diesel prices are falling, and if you want to tax your passengers, when the customer service is deteriorated and you don't improve it and you tax your customers, there is always going to be this. So our direction is very clear. We want to make railway self-sustainable. We want to make railway profitable. We want to put that money back into the railways for customer benefit, for expansion of capacity, for increasing the ability of railways to carry more freight. We already set for ourselves a goal of 1 billion to 1.5 billion. And with the dedicated freight corridor coming into reality, this is possible. We have also started work on other 4 freight corridors besides the 2 that are getting completed. So let me bring in 2 of our experts who are in the studio with us. Mr. Chandrajit Banerjee, I want you to wear 2 hats as a passenger of Indian Railways and as always a leader and representative of Indian industry. So as both, what is your key reaction to what was announced by Minister today? You know, to answer your question, first of all, I must congratulate the Honourable Minister. Phenomenal budget, actually. We have never seen something like this in a railway budget, I don't know for how many years. And having said that, you said that wearing 2 hats, and I would think that it's a budget which is for all stakeholders. It's just not for the common man or for wearing the hat of the industry. You look at it the way, I mean, you can give value for money to your customer. मंत्री जी, आपसे एक और सवाल मैं जानना चाह रहा था. रेलवे कंगाली के कगार पर है, पैसे खत्म हो गए हैं. आपने कहा है कि आपको काफी 8,000 करोड़ पैसा और जुटाना है. जो पुराने प्रोजेक्ट हैं उनके लिए 1 लाख करोड़ और आपको चाहिए. ये पैसा कहाँ से आएगा? आपने कहा कि सिर्फ बजट से तो नहीं आ सकता है. देखिए, एक तो
ये मैं समझता हूँ, जैसे बैनर्जी साहब अभी बता रहे थे कि ये हमारे एक ऐतिहासिक कदम है। हमने बजट से अलावा नए रिसोर्सेज ढूंढने की कोशिश की। आपको याद होगा तो हम अमेरिका को कहते कि अमेरिका वुडंट हैव बीन ग्रेट बट फॉर द रोड्स। तो रोड्स अमेरिका ने 1930 में डिप्रेशन के बाद में बनाए। वो पैसे कहाँ से आए थे? उसके लिए बॉन्ड्स इशू किए गए थे। चाइना आज जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उसके लिए पैसे कहाँ से आए? उन्होंने भी लोन लेके ही पैसे खड़े किए। यूरोप ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना वहाँ से भी पैसे उसी तरह से आते। और हम भी हमारे अदर सेक्टर्स में देखेंगे, रोड्स है या शिप्स है और कोई इंडस्ट्री है, और प्राइवेट सेक्टर भी यदि कोई नई निवेश करने की शुरुआत करता है तो उसके लिए बहुत सारा धन। लेकिन डर है कि बहुत निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर जो है लोग डरते हैं उनसे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि निजीकरण के अलावा हम इसके लिए तो डेट ले रहे हैं ना। अब हम डेट ले रहे हैं उसका मतलब निजीकरण नहीं कर रहे। हम डेट तो अपने बैलेंस शीट के ऊपर ले रहे हैं, हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है उसके बैलेंस शीट के ऊपर ले रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा, जैसे आज हमने मेरे भाषण में कहा, कि ऐसे बहुत सारे विदेश में और देश में, जैसे LIC है हमारे देश में, या हमारे पेंशन फंड्स है देश में और विदेश में, हमारे बहुत सारे इस तरह के सॉवरिन वेल्थ फंड है। वो चाहते हैं कि पैसा इस तरह से निवेश किया जाए जो उनको तुरंत नहीं चाहिए। वो पैसा चाहते 20-30 साल के बाद मिले। और रेलवे भी ये चाहती है कि 20-30 साल के बाद ही रिपेमेंट हो, और उसके दौरान सिर्फ हमको इंटरेस्ट देके उसको सर्विस करना पड़े। इससे अच्छा विन विन सिचुएशन रेलवे के लिए। और जो निवेश करेंगे, भार जो है पैसेंजर पे नहीं आएगा, जो नया पैसा जुटाने की जो भार कैसे आएगा और पैसेंजर के ऊपर कैसे आएगा? वो तो ये तो रेलवे आज भी यदि रेल के लिए हम बजटरी सपोर्ट से पैसा लेते हैं तो बजटरी सपोर्ट के पैसा कहाँ से आता है? वो भी तो मार्केट से बोरिंग कर रहे हैं। मार्केट से बोरिंग करने के बाद वो भी टैक्स से ही उसको रिपेमेंट कर पाएंगे। और यदि आपका दूसरा सुझाव है कि हमको ये नहीं करना चाहिए, तो दूसरा सुझाव क्या है? पैसेंजर को फेयर बढ़ा के उसका फाइनेंसिंग करना चाहिए। तो वो तो डायरेक्ट उनके ऊपर बर्डन आ गया। तो हम तो ये चाहते हैं कि इसके अलावा 30 साल तक रेलवे खुद इतनी प्रॉफिटेबल बने ताकि रेल की स्थिति इतनी सुधरे, ताकि अपने इंटरनल जनरेशन से भी निवेश कर पाए। और इंटरनल जनरेशन के निवेश करने के लिए जो धन है इनिशियली आवश्यक है, क्योंकि अभी जैसा विशेष साइकिल की बात हुई, पैसा नहीं इसके लिए निवेश नहीं इसके लिए डिटोरेशन हो गया। तो आप साइकिल को तोड़ेंगे कैसे? निवेश करना पड़ेगा। जो काम पूरे देश में विदेश में सब बड़ी बड़ी जो आर्थिक व्यवस्था बनी है, चीन तो कहाँ से उभर आए लोग सोचते रहते। चीन का इतना जल्द उभर आने का एक प्रमुख कारण यदि कोई होगा तो एक है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया। उसके लिए उन्होंने भी अपनी अलग अलग संस्थाओं से बोरोइंग किया। तो कोई भी यदि आप समझते कि सब पैसा रेलवे अपने पास लाएगा तो उसके लिए एक ही साधन है, फिर पैसेंजर के ऊपर किराया बढ़ाना चाहिए, या क्योंकि फ्रेट तो काफ़ी बढ़ गया पहले। तो क्या ये साधन हो सकता है? नहीं। तो इसीलिए हमने ये काम किया। तो राजीव लाल, आप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन IDFC के, पैसे की बात हो रही है, लेकिन आप बताएं आपको एक चीज़ जो अच्छी लगी बजट में और एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी। जी, इस बजट का सबसे बड़ा महत्व ये है कि मंत्री जी ने 5 साल का पूरा परिवर्तन का प्रोग्राम क्लियरली सेट आउट किया है। 4 लक्ष्य, 5 ड्राइवर्स, 11 थ्रस्ट एरियाज। मेरी राय ये है सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इन 3 मुद्दों पे खूब केयरफुली गौर करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि फेयर हाइक बढ़ी नहीं, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम बताया गया है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि 5 साल के अंदर अंदर भारतीय रेल को फिनेंशियल सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के रास्ते पे वापस लाना है। और उसकी शुरुआत कैसे हुई है वो भी समझाया है इस बजट में कि ऑपरेटिंग रेशो इस साल से पिछले 9 साल से सबसे बेहतरीन रहा है। तो मतलब, और जो कि फेयर हाइक की बात है, वो मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि फेयर हाइक करना दुनिया में सबसे आसान चीज़ है। और नई ट्रेनों का ऐलान करना भी। हाँ, और ये आलसी शख्स का रिफॉर्म एजेंडा है फेयर हाइक करना, जो कि मेहनती है। उसको पूरे रेलवे को ट्रांसफॉर्म किस तरह करना है, कॉस्ट किस तरह को कंट्रोल में लाना है, इन्वेस्टमेंट को किस तरह प्रायोरिटाइज करना है, इस बजट का मुद्दा ये है। राजीव जी ने बहुत बड़ी बात की, बट मंत्री जी, आपने कहा कि पैसेंजर सुविधाओं के लिए आपने बहुत जोर लगाया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ स्पीड की बात करें, हाई स्पीड होगा, बुलेट ट्रेन होगा, लेकिन जो बुनियादी दिक्कतें हैं रेलवे स्टेशन में, ट्रेन में जब कोई सफ़र करता है, वो दिक्कतें अभी भी हैं, गंदगी अभी भी है। जिस तरह से समय पर ट्रेनों को आना चाहिए वो नहीं आ रही है। अभी भी कई इलाके हैं देश के जहाँ पर ट्रेन नहीं पहुँच रही है। स्टेशन तो बन गए हैं, लाइन भी शायद लग गई है, लेकिन ट्रेन नहीं पहुँचती है। तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं,
क्या पहले इनको नहीं सुधारना चाहिए इससे पहले कि हम हाई स्पीड और बुलेट ट्रेन की बात करें? तो इसलिए मेरे स्पीच में आपने देखा होगा कि हमारा बहुत सारा करीबन बहुतांश मेरा जो स्पीच का पूरा स्पीच का जो कंटेंट था वो इस तरह की पैसेंजर सर्विस के ऊपर डिवोट किया गया था जो आम आदमी से उससे कुछ तालमेल है, जैसे सफाई है, बेड लिनियन है, केटरिंग है, टिकेटिंग है, करप्शन है, सर्वेलेंस है, इस तरह की जो सुविधाएं हैं, या एस्केलेटर चाहिए, व्हील चेयर चाहिए, छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी बैटरी चार्ज करने के लिए ट्रेन में इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा? बिकॉज ये भी ऐलान लगते हैं जो जमीनी तौर पर नहीं दिखते। नहीं, देखिए ये आज बजट हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आज कल से शुरुआत होगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इससे पहले भी बजट में कहना इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हमने इससे बहुतांश हिस्सों के ऊपर काम शुरू है। आपने सुना भी होगा मेरे बजट स्पीच में मैं कह रहा था कि ये मई में होगा, इसकी शुरुआत जून में होगी। कुछ तो हमने जैसे ई केटरिंग है उसको तो हमने जनवरी में शुरू भी कर दिया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक मोबाइल के ऊपर आप टिकट बुक करते हो, उसकी मुंबई में शुरुआत भी हुई है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। योर प्रॉमिस टू गिव a ticket in 5 minutes to anybody who reaches the station is a very big promise. Yes, but if we have to deliver, and that is why we are prepared for it. And now, of course, I cannot go and stand at every station to give ticket in 5 minutes, but we have to put a system in place, and that is what we have already put in place. We are working on that. So therefore, most of the things that have been mentioned are timelined. They are going to be implemented in a very stipulated time period, for which responsibility has been fixed. Their work has already been started, particularly related to the customer service issues. As far as the other part is concerned, as Mr. Raju Lal was saying earlier, we already set the management practices, how the organization has to change to deliver on the other big issues like enhancement of a capacity or construction, things like this. First time in India's history, we have created a new partnership with states. This is like creating another 20 new railways. We are going to work with each and every state government to create an infrastructure for railways in their state. So that would enhance the ability to deliver. It's not just railway alone will deliver. Now there will be another 20 entities which will deliver. We have created a new SPV with other coal ministry, oil ministry, cement ministry that will deliver. So therefore just imagine, rather than one entity delivering now, there are multiple agencies which will deliver the same objective, same purpose. So which is a better design? Is it something that we keep it centralized, or you try to make it done? And you're also giving more power to your officers for delegation of this. Do you think railway needs to be reorganized in terms of more departments and given more freedom to regional heads? See, one is the work culture, other is the work ethics, and the other is the work structure, how work actually is going to function, for which we really need to organize it on the basis of authority, giving them more powers, etc., etc. I personally don't think that at this particular stage we should think about something. We should work on it. At that time we can do many more things, but this is the time when we need to do it. There's a very big ticket announcement in the budget, which is station development. We are expecting the private sector to come forward and develop a station. That itself will bring in the huge investment into the railways. That will bring in a transformation of our railway stations. This is going to be a very big ticket item, which I think we have missed. We have talked about private tariff, private freight stations, which will be happening. We are actually talking about a new regulatory system wherein private sector participation can be regulated properly through an independent organization of dispute redressal system, which has never happened before. So there are many areas, many issues which I would get in more agencies to implement, not just one centralized railway board or one minister sitting in Delhi. That's a great point, but let me also follow your example and devolve my responsibility and request Chandrajit and him to ask a question to you. If there's one question that you would like to ask, Minister. No, I think one of the greatest things that the budget sees is balancing in terms of and the vision in the budget. You have really talked about you've touched a lot on environment. You've touched about and you explained actually where the resources would come from. So if you would one question really, how do you see that all of this getting translated into some results? What would be the time frame that you would really like to, for the common man? I'm really asking not from the point of view of industry. I think you're absolutely right. I think in terms of customer service, more or less all the programs are on track. We are in the process of implementing many of them. Some will happen with this year, some may take little longer. For example, redesigning the coach itself might take little longer, though National Institute of Design has already been tasked with that. I went to Ahmedabad personally to meet them.
and that will take little more time. As far as safety is concerned, that will start the work immediately on eliminating about more than 3,000 unmanned level crossing. Right. That's a tall order. It is something like 40% of our total unmanned level crossing, which we are trying to attempt to do it in 1 year. Many technology related issues, we are actually working on it. I talked about Kayakalp Council, which is transforming the railways completely. We have in mind a very renowned individual in India who is very well acclaimed, well respected, to head that council, to make sure that he will look around and try to work on the railways transformation. So we are working on many issues which might take some time, some might be delayed in terms of time, because as I said, the train sets, which is like a poor man's bullet, which will happen in 2 years. So there are something like doubling, tripling. Some will be completed this year, some might be completed in 2 to 3 years. So that is the time frame. राजीव जी, वन क्विक छोटा सवाल क्योंकि समय कम है. तो just a complimentary question कि the biggest challenge aside from customer satisfaction is actually capacity expansion. और वही लोगों का concern है railways की execution capacity क्या है. तो what are your ideas on accelerating execution? It's a very valid point, and in fact for that we have to create a new organizational mechanism. So one is that our public sector undertakings like IRCON and like RITES and others, they will be able to implement projects on their own balance sheet if you give them the work. So then we can even do it on the EPC basis, so that it could be completed faster, the cost can be properly monitored. So that is one way, that's one implementing agency that could implement the project. Number two, as I said, the state governments and we could jointly undertake some projects, so that will be a completely new entity that could do it. The third structure that we have created today is with the PSU, that could also implement. But fundamentally, the public sector undertakings, which are the ability, track record of implementing and laying tracks, the track record of tracks, which actually will be able to implement it faster and better, provided you give them freedom, provided you make them operationally efficient and give them funding. So the funding could come, because if you look at it, a company has a 10,000 crores for 15,000 crores worth of net worth, they can leverage it by 3 times more. So they can bring in another 70,000 crores in their balance sheet alone, and those leverage debts can then be used for financing. So railways doesn't have to even raise money in their own balance sheet, but railways could use the balance sheet of the PSU, which are owned anyway 100% by the railways. So I agree with you, it's a good point, and in fact I must say that people like Mr. Rajiv Lal and Chandrajit Banerjee would be our continuous guide in terms of deciding, because we don't feel that the wisdom lies only within the government. We have to reach out to people like them to actually get some ideas, and we take them on board, which we have always been getting, but I am sure they will get it more in the years to come. सुरेश जी, हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन आखिरी एक मैं आपसे सवाल और मुद्दा उठाना चाहता हूँ. ये कब होगा कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए ट्रेन से जो सफ़र है वो उतना ही आनंददायक और कंफर्टेबल हो जितना आज प्लेन से जाने में है? देखिए, इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कल होगा, लेकिन मैं जरूर ये भी नहीं मानता हूँ कि कभी नहीं होगा. तो ये जरूर होगा और होने की आवश्यकता भी है, और मैं भी उस रास्ते पे काफ़ी सफ़र करते आया हूँ. लेकिन ये बात सही है कि फॉल्स प्रॉमिस मैं नहीं करना चाहूँगा कि कल होगा या परसों होगा. कोशिश जारी रहेगी, और इसमें जो जैसा हमने कहा कि 5 साल का ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा है, तो कुछ समय देना चाहिए. पहले मरीज इतने आईसीयू से बाहर आया है, तो उसको धीरे धीरे करके उसको एकदम कहेंगे कि कल लेकिन हम चाहते हैं कि आप जैसा डॉक्टर इस मरीज के लिए बना रहे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा है कि 3 सालों में 8 मंत्री बदले हैं. तो आप जैसा डॉक्टर जो इस मरीज को ठीक कर रहा है, वो कितने समय तक रहेगा? अभी देखिए, तो डॉक्टर को अभी तो पेशेंट को एग्जामिनेशन करने की शुरुआत हो गई है. अभी तो थोड़ा उसको चलने दीजिए, उसका उपचार चलने दीजिए, उसके बाद में पेशेंट ठीक हो जाएगा. ऐसा मुझे विश्वास तो जरूर है, 100% विश्वास है. और हम पेशेंट को पेशेंट नहीं छोड़ेंगे, हम पेशेंट को अच्छा एक मजबूत इंसान बन के ही छोड़ेंगे. ये भी हमारी पूरी तरह से इच्छा है और विश्वास भी है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्री जी, चंद्रजीत आपका, राजीव आपका.